Excel in the last session. Okay, and with the continuation with that, we will discuss few more functions today. I'm sharing my screen just quickly, 1 minute. Yeah, I hope my screen is visible. No, ma'am, not yet. Yes, ma'am. Fine. Yeah. Yes, So, ma'am, visible. a few functions we are already discussed, and now a few functions which we actually practically we were doing. So, left, right, we did. Then trim, concat. These are the basic functions we already discussed. Today we will talk about few more interesting functions which are really useful as a data scientist, basically data analyst, when we are going to use basically Excel. Okay. So the VLOOKUP. What do you understand by VLOOKUP? Any idea? I'm just opening up. Vertical lookup. Yeah. But what does it means actually? Why we need that? Or with the help of VLOOKUP, what actually we achieve? That's my question. Ma'am, we can achieve some data from the two tables by Hmm. using VLOOKUP or Hmm. HLOOKUP example. Okay. Basically, again, VLOOKUP is also one of the most important formula which is being used by the data analyst, and it's a function. I would say whatever we are discussing right now in the even the last session also, they all are the function. They're not the formulas actually. So this is also one of the important Excel function. With the help of VLOOKUP, what we actually get it will look for a particular value, or suppose like there is a data set. Okay, let's say there is a 10,000 records in my data set. Okay, so out of 10,000, if I just want to look for a employee whose location is Delhi. Okay, so Delhi is one of the basically information I'm looking for. Are you understanding this? Yes, ma'am. So that I will get it in with the help of VLOOKUP. Okay. So it will look for a value in a table and it return the information from the basically another column which is relating to that value. Okay. So it is basically it is a great combining data from different list into one, or it also used for comparing two lists. Okay, whether it is matching or not, or any missing value, you can have it. So there are many use of the VLOOKUP. It's not only just it will return that information, it also help for the basically comparing two list in the sense two column ideally, or it also checks any basically missing value or missing item into the list. Okay, so that's why VLOOKUP is very important function. I hope it is clear. Yes, ma'am. Okay, so what it will do, it will look for a value in a particular table and return the information. Okay, from the another basically column. COLUMN. Okay, and relating to that value. It's not only limited with that, it is also basically great for combining data from from different from different lists into one, or we can also use VLOOKUP for comparing two lists for matching specific basically criteria, or we also use VLOOKUP for missing item. So there are many uses of VLOOKUP. Okay, that's why it is very important. Okay.
when it comes to basically many uses, so it prompts for 4 pieces of information. So when it comes to use of VLOOKUP function, so VLOOKUP function जो है वो 4 पैरामीटर्स लेता है. 4 पैरामीटर्स मतलब जैसे अब फॉर एग्जांपल हम अभी सिंटेक्स हमने इतने सारे फंक्शंस के देखे, राइट? सो व्हाट आर द सिंटेक्सेस वी हैड सीन कि लेफ्ट है तो लेफ्ट के ब्रैकेट में हम टेक्स्ट कॉमा नम कैरेक्टर्स, तो जो भी 2 वैल्यूज ले सकते हैं, राइट? देयर आर 2 पैरामीटर्स हियर. सिमिलरली कॉनकैट में जो भी आपके टेक्स्ट है जिसको आपको कॉनकैट करना है, यू विल बी सेंडिंग दैट एज अ पैरामीटर्स. सेम विद द काउंटिव, यहाँ पे आपने क्राइटेरिया रेंज लिया और फिर क्राइटेरिया 1 2 3 4 वॉट एवर यू आर हैविंग. सो दैट इज अ unlimited things you can pass it here, but in the VLOOKUP there is a fixed 4 criteria or 4 piece of information you have to set it. Okay, so let's talk about the syntax of VLOOKUP. Are you understanding now what I am discussing right now? I am discussing the syntax कि VLOOKUP जब हम यूज करते हैं तो उसके फंक्शन के अंदर हम क्या पैरामीटर डालेंगे. ओके, सो इट प्रॉम्प्ट, हम यहाँ पे पहले देखते हैं. इट प्रॉम्प्ट्स for 4 parts or 4 pieces of information. Okay, so the very first is what we are having. It first take the value you want, मतलब जो भी यूजर को चाहिए है, to look for. मतलब अगर जैसे एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि मान लो कि आपके पास एक स्टेशनरी, जैसे स्टेशनरी का हमने लास्ट टाइम वी वे आर डिस्कसिंग वन ऑफ द बेसिकली थिंग्स इनटू द स्टेशनरी काइंड ऑफ डेटा. अब वो स्टेशनरी में अगर स्पेसिफिकली आप पार्कर पेन या आप फोटो फ्रेम या आप A4 साइज का नोटबुक, यू वांट टू फाइंड आउट दैट वैल्यू. ओके, सो दैट वैल्यू यू आर गोइंग टू एंटर फर्स्ट. ओके, सो दैट इज द वैल्यू यू वांट फॉर, मतलब आप किसके लिए वो VLOOKUP यूज कर रहे हो वो आपको डालना पड़ेगा. फिर विच टेबल यू आर लुकिंग फॉर. ओके, तो यहाँ पे क्या है कि यू कैन ऑल्सो यूज कौन सा कॉलम है, कौन सा टेबल है या कौन सा वर्कशीट है. ऑल दैट यू कैन पास इट हियर. ओके, विच कॉलम has the information you want to return. Okay, and the fourth one will be what type of lookup you would like to perform. मतलब मिलने के बाद वो रिटर्न करेगा, तो whether it is false or a true kind of criteria you will set here. So let's talk about syntax here. Okay, तो आप फॉर्मूला लिखते टाइम हमेशा इक्वल्स टू लिखते हो हमेशा, तो I'll start with the equals to here also. I'm just talking about a VLOOKUPs, that's a vertical one, so I'm just looking with the V basically things. We also have a HLOOKUP also. Okay, and we will talk about those also. So lookup value, so lookup value जो भी रहेगी आपकी, आपको वो पास करना पड़ेगा. Then we will be having table array. Okay, then we will be having column. One second, COLUMN, column, index number, and the range for the lookup. So these are the parameters you will be set it. Okay, so now if suppose I just go to the example which I am already using in one worksheet. So I'm going back to the worksheet. Okay, so let's say this is my table. Okay, or this is my information. In this example, if I just want basically this table, what exactly it is containing the cells. Okay, cell value, cells है ना, cells from our employees, जो भी employees है उनका cell है, कितना उन्होंने cell achieve किया, targets में कितना sell किया कोई भी product. And if you see in the another table, so this is a 2 table. Okay, so this is a 1 and this is another one. Okay, so this is the employee wise, basically values about the cell and the name with the employee ID. That's a basically simple index I had taken, and the region wise. Okay,
And then second, here I am having another table, or we can say two columns, where only the names are given and the regions are given. Okay. So there are two tables here. If you just observe, there are two tables here. Okay. So there is another table with the further information about these employees. Okay. So we are just keeping on the very smaller way, basically. Okay. Now what I want to like to bring the data. Okay. Showing which region the employee is based into cell table for the analysis. दो टेबल है. Now I want, basically I would like to bring a particular set of data, okay, showing which region the employee is based into cell table. मतलब ये cell का table है और ये employee का data है. Okay. How I'm going to use that? Can you just tell me, anyone? How I'm going to use that? Ma'am, in the lookup value, we will select a region, and then for table array, we will select the base table in which the cells are included, हाँ. and then column index. So basically, I think cells column we can select the cells column index, and then range what we want, exact or approximate. Okay. Fine. So if suppose like I am going to check it here like this, if you just see here, I had already applied the VLOOKUP here. What I'm getting actually, ये जो region है ना, ये यहाँ से उठा के आया हुआ है. So I am getting the east from the this region table for the Francisco Chang. Are you understanding this? Suppose यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक एंट्री करी अभी मैंने, ठीक है. So I just made it up one entry here. Okay. And then I'm just making an entry again here. One second. It will not coming because it's not belongs to certain things here. Okay. One second. Do one thing. हम पहले ये existing की बात करते हैं, फिर new value add करके बात करेंगे. Okay. So what I did here, I just taken a B2. Okay. I want the employees, respective employees, with the which array I want this name array, okay, and the region array. Okay, I had taken this. कहाँ से मैंने लिया array? यहाँ से उठाया. Okay, and then I had taken region up to what I had taken 12. Okay, up to 12 I had taken here. तो यहाँ पे मुझे जब मैं करूंगी यहाँ पे 13, then I will get it this. ओके. तो यहाँ पे 12 ही लिया था, इसलिए वो उतने ही रेंज का वैल्यू दिखा रहा था. एंड देन द बेसिकली the second parameter what I got here, the see third one is 2. What exactly the 2 is? क्या क्या हमने दिया है? विच कॉलम हैज द इंफॉर्मेशन यू वांट टू रिटर्न. मतलब इस टेबल के कौन सी कॉलम की इंफॉर्मेशन है? सेकेंड कॉलम की, तो वो सेकेंड कॉलम आया. और द फॉल्स एज अ बेसिकली अगर नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो वो आपको नहीं दिखाई देगा. लाइक दैट इट इज. ओके. तो भी क्यों नहीं लिखा रहा है? Ma'am, will it work on 2019 version? Yeah, it will. VLOOKUP का नहीं इशू है. एक काम करो, आपको ये मैं डेटा दे रही हूँ, ये दोनों अलग अलग टेबल सेपरेटली आपको कॉपी करके दे रही हूँ मैं. आप इसके ऊपर वर्क करो, तब तक मैं यहाँ पे ये चेक करती हूँ कि क्यों नहीं आ रहा है ये. सो दिस इज अ वन टेबल.
And this is another table, values. Ma'am, please can you send it in the Excel format because it can't be directly copied. Is it? One second, huh? Yes, ma'am. Yes, ma'am. He is right. Yes. You want the Excel in the sense complete Excel format, okay? Yes, ma'am, because it can't be directly copied from the charts to the Excel. Okay. I will do one thing. Yes, ma'am. In last call, it has taken a lot of time of us. Oh, yeah. I will do that. So this is our practice sheet we are using for the. ठीक है? फिर मैं यही आपको देते चलती हूँ, मतलब ज्यादा बेहतर रहेगा आपको. You mean to say this only, na? Yes, ma'am. Now I hope it will be easy for you guys, right? Everybody received Excel sheet? Yes, ma'am. Okay. Now All try to just execute the things which we discussed. Ma'am, can you just please show the formula once Yeah. again? Are you able to see? Yes, ma'am. Excuse me, ma'am. Yeah. Ma'am, in the last, the 12th part, which we have to calculate. Where? Ma'am, the last one, the 12th number. So we will write like this is equal to VLOOKUP, and what will be the reference? Like it will be which column? Region. It will be the region actually. The complete region is going to be pasted here.
for every employee. Okay, ma'am. Taken. Ma'am, same error occurred in our sheet also. See, the formula need to be basically changed, or the range which you are taking now, that has to be changed. Okay. Yeah, ma'am. Kindly just check with the range which you have taken. Now there is another function for the date specifically, now and today. Have you tried those anytime? Ma'am, can you repeat, please? Now and today. Now and today. Yeah. I got one more example actually. 1 second. Are you able to see on my screen?
Yes, ma'am. See, I had taken a very basic example here for the VLOOKUP. Instead of two tables, we can do it on a simple one table as well. Okay. So ये एक table है. Okay. And in this table, if you just I check with the example one here. Okay. So यहाँ पे item है prices है. Simple table है ये. Okay. अब मैंने VLOOKUP लगाया. मुझे check करना है photo frame का कितना कीमत है. What exactly the price of photo frame. Okay. So I just use a photo frame में जो वैल्यू चाहिए है, कहाँ से चाहिए है, ऑब्वियसली फोटो फ्रेम जो बिलोंग्स कर रहा है वो कौन से कॉलम को कर रहा है, ए. सो आई जस्ट टेकन ए. देन प्राइस मुझे कंपेयर करना है बी कॉलम से, सो आई हैव टेकन अ बी. कहाँ तक लेना है मुझे, अप टू 16, सो आई जस्ट टेकन अ 16 हियर. सिर्फ सिलेक्ट करना है ऐसे. ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? Ma'am, what is the true and the false? सी टू, बेसिकली हमने क्या, हमको कितने पैरामीटर्स देने हैं, which column has the information you want to return, okay, and what type of lookup you would like to perform. Okay, so यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर आएगा. ओके, कॉलम इंडेक्स नंबर मतलब ये ए और बी, ये कौन सा है नंबर, दो है, राइट. सो दैट्स अ कॉलम इंडेक्स नंबर. एंड रेंज ऑफ द लुकअप, मतलब एक रेंज होती है ना, फॉल्स है मतलब ट्रू है या फॉल्स है. अगर फोटो फ्रेम एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो वो वहां पे आपको वैल्यू नहीं आएगा, लेकिन वहां फोटो फ्रेम है मतलब आपके पास वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, देयर इज नो मिसिंग आइटम, दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज ए फॉल्स हियर. Okay, ma'am. दैट्स अ लुकअप रेंज बेसिकली. ओके, Okay, ma'am. अभी मैं ये आपको डेटा दे रही हूँ, दैट वुड बी रियली इजी फॉर फर्स्ट ट्राई विद द लुकअप पार्ट. ओके, मैं हमारी प्रैक्टिस शीट पे ये कॉपी कर रही हूँ. मैं ये फिर से शीट आपको शेयर कर रही हूँ. अभी ये इस पे सिंपल एक बार ट्राई करो लुकअप का, वी लुकअप पे, और फिर हम थोड़ा दो टेबल पे ट्राई करेंगे. आप आपका खुद का डेटा भी एक जनरेट करके एक 10 कॉलम पे डेटा रेप्लिकेट करके आप ले सकते हो. नॉट जरूरी नहीं कि जो मैं दे रही हूँ वही करना है आपको. Ma'am, but in the previous problem where we are finding region, हम्म. it is showing NA again and again. एने आप नहीं, आपको क्या रीजन नहीं मिल रहा है वहां पे, Yes, ma'am. यहां से इस टेबल से नहीं उठाया आपने. Ma'am, I am taking VLOOKUP and then the name हम्म. which I want to find, and then range from H2 to H15, the column H13, हम्म. and then I'm writing the two parameters and then false. हाँ, सेम आपने जो मैंने आपको शेयर करा है उसी शीट पे काम कर रहे हो ना आप? Yes, ma'am. हाँ, तो क्या दिक्कत है, देखो अभी मैं सिलेक्ट करके बता रही हूँ, हर एक का देखो पैरामीटर्स दिख रहा है. कौन सा है ये, B2. ठीक है, B2 मतलब ये फ्रांसिस्को चैंग पे बात हो रही है. टेबल रेंज लिया मैंने, ये वाला देखो ये सिलेक्ट हो गया, दिखा आपको. Yes, ma'am. फिर जो है ये पूरा टेबल रेंज फिर से कंपैरिजन के लिए. सेकंड जो इंडेक्स कॉलम नंबर है कौन सा है, जो नेम ऑफ द Ma'am, एम्प्लॉइज है, yes, ma'am. एंड द फॉल्स, अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो वो फॉल्स आएगा. Okay, ma'am. अभी जो भेजा हुआ शीट है उसके ऊपर एक बार ट्राई करो विकअप वी लुकअप का, ये वाले Yes, ma'am. एग्जाम्पल पे. एंड देन सेकेंड एग्जाम्पल ऑल्सो वी आर हैविंग कैटेगरी, और अब ये कैटेगरी पे भी हम वी कैन ऑल्सो यूज द बेसिकली फोटो फ्रेम. अगर मुझे स्पेसिफिकली किस कैटेगरी में है वो भी मैं देख सकती हूँ.
Like photo frame is in the which category? Gifts category. Num, so basically, 2 is the column number at which we want to find the value, na? Right. देखो यहाँ पे चेंज होते जा रहा है। अगर मुझे और भी कुछ चाहिए जैसे स्टेशनरी है तो स्टेशनरी कहाँ जाएगा ये? यहाँ पे मैं कॉपी कर रही हूँ डायरेक्टली, सो विदाउट मेकिंग सम चेंजेस हियर। सो स्टेशनरी पे वैल्यू, ओके आई जस्ट मेड द चेंज हियर। ओके 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 ओके, वन सेकेंड ना, मैं अभी ले रही हूँ स्पाइस रैक। टी शर्ट पे काम किया है इसने। इस पे काम कर रहा है, ओके। So E4 is going to compare with the categories here. ये वाला शीट दूँ आपको कॉपी करके? Yes, ma'am. One second ना। ऑलरेडी फॉर्मूला लगा हुआ ही है, आपको जस्ट एनालाइज करना है उसको। ओके, सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। अब जब नया वर्जन इंस्टॉल कर रहे हो ना ये सेम फाइल का, तो पुराने डिलीट कर लेना डाउनलोड में, नहीं तो बहुत सारे आपके पास अननेसेसरी फाइल्स हो जाएंगे विद द सेम नेम एंड देयर विल बी कंफ्यूजन आफ्टरवर्ड्स। सो वॉट एवर बी द रिवाइज्ड वर्जन यू आर डाउनलोडिंग, तो पहले के प्रीवियस दोनों डिलीट कर दिया करना, मतलब दोनों डिलीट कर देना। Now there is another basically function called now and today. कैसे काम करेंगे ये now and today? How it will be basically used and how हम कैसे यूज करेंगे इसको? Yeah. Am I audible? Oh, ma'am, is it case sensitive? If we, for example, I want to हाँ. find the price Yes. of the. Yes.
That's why I'm facing that any error again and Yeah, again. it's a case Okay. sensitive. Okay, ma'am. Okay, then there is another function. Quickly, we will discuss those now and today. So how it actually works in the same, basically I will be using. So now is basically it will give a complete date with the time. And what is today? How it will work today? Immediately use करो. वहीं पे check करो. Now and today. मैंने नाउ करके दिखाया आपको, टुडे करो अभी. Done with it, ma'am. दोनों हो गया. Yes, ma'am. Good. Now there are few more functions. Okay. You can also count the work days. How you will count the work days? Work days. तो उसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा? You have to create basically one table. Okay. उस टेबल में आप एक तो इधर एम्प्लॉय ले लो. ओके. या आप कोई आइटम नेम ले लो. ओके. And in that item name you can just have ordered. Okay, so ordered item ordered per month. जनवरी का एक काउंट लो, फरवरी का एक काउंट लो, मार्च का लो. ऐसे करके सारे मंथ्स का एक रैंडम एक वैल्यू क्रिएट करो अपने खुद का. एंड देन यू कैन अप्लाई द वर्क डे और देयर. Ma'am, can you please repeat the column names? कॉलम नेम आप कुछ भी ले सकते हो. एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम ले लो. ओके. और वो कब से काम कर रहे हैं. सो और आवर्स दे हैड वर्क, ऐसे ले सकते हो. जनवरी में उन्होंने कितने घंटे काम किया. जैसे एक सिंपल एग्जांपल बता रही हूँ मैं आपको. जस्ट शो यू वन एग्जांपल स्ट्रेट अवे लाइक दिस. ओके, मैं आपको ना इस तरीके से बताती हूँ, ज्यादा बेहतर रहेगा. मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? No, ma'am. वन सेकेंड, आई एम No, अगेन. yes, ma'am. Oh, देखो ऐसे बोल रही हूँ मैं. ओके. अब यहाँ पे आपको क्या लेना है? एनी आइटम यू कैन टेक इट लाइक दिस. ओके. और कितना, कितने मंथ में वो कितने बार ऑर्डर आया, इस ऐसे टेबल को क्रिएट करो आप. दिस इज अ काइंड ऑफ असाइनमेंट आई एम गिविंग यू. ओके. और उसके ऊपर आप क्या क्या फॉर्मूले लगा सकते हो, क्या क्या बेसिकली फंक्शंस लगा सकते हो, दैट यू ट्राई टू एनालाइज. I'm giving this image in the chat also, that would give you more clarity. आप इमेज को डाउनलोड कर सकते हो, so that for the reference you can create the table. आप ये टेबल ऐसे भी क्रिएट करा सकते हैं. अदरवाइज आप एम्प्लॉय, जैसे डेली वेजेस वाले एम्प्लॉयज हैं, तो आप एम्प्लॉयज का नाम या वर्कर के नेम लिख दो. जनवरी में उन्होंने कितने घंटे काम किए, 10 एम्प्लॉयज ले लिए, 10 एम्प्लॉयज के कितने घंटे हुए, फरवरी में कितने हुए, मार्च में कितने हुए, ऐसे आप लाइन से ले सकते हो. सो एनी काइंड ऑफ डेटा यू कैन क्रिएट एंड देन यू हैव टू एनालाइज कि अभी तक की इसमें हमने जो भी फंक्शंस डिस्कस किए उसमें से कौन से फंक्शंस आप इस टाइप के डेटा पे अप्लाई कर सकते हो. दिस इज काइंड ऑफ असाइनमेंट आई एम गिविंग यू. Then the second one is keep something in the blank. Okay, मतलब जैसे कुछ blank करके रखो. जैसे कोई डेटा आपने क्रिएट किया. ओके. ऐसे ही टाइप का डेटा आपने क्रिएट किया एंड मेक सम फील्ड्स ब्लैंक और देयर. जैसे यहाँ पे एक ब्लैंक कर दी हमने. ओके. वन सेकेंड, आई एम नॉट गोइंग टू डू इट इन दिस, आई विल बी जस्ट हैविंग. ठीक है, मैं यहाँ पे ये डेटा ब्लैंक कर रही हूँ. ओके. So this is a blank data I am having. Then I am having this blank and I am having some another name here. Okay.
So I'm just having a Ram here, okay? And then I'm having Sham here, okay? Then I'm having Kareem here, okay? So any data I had taken, okay? Random data I had entered here, okay? Now there is a blank here. Are you able to see? In my data set, there is a blank. अभी फुल नेम की बात मत करो, फुल नेम हमने तो एक फंक्शन अप्लाई करके निकाला था. आप सिर्फ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की बात कर रही हूँ मैं अभी. अब ये एक डेटा जो है आपको देख के समझ में आ रहा है कि देर आर 3 fields which are blank, okay? But try to understand and imagine if there is a huge data set, okay? Tremendous data set है, किसी particular डिपार्टमेंट का है, कंट्री का है, किसी का भी हो सकता है, ओके? एंड देयर यू वांट टू डील विद सर्टेन मिसिंग डेटा, बिकॉज सी डेटा एनालिस्ट का काम फंक्शंस लगाना भी है, एनालिसिस भी करना है, प्लस एट द सेम टाइम वी हैव टू फॉलो द डेटा एनालिसिस process also, right? So you want to deal with the missing data. How you are going to deal with the missing data? Because this data is missing, right? How you are going to deal with this missing data? So there are some techniques actually. Okay, there are certain techniques to deal with the missing data. So we will discuss quickly the missing data techniques, क्योंकि वो टॉपिक हमारा quickly हो जाएगा within a 10 minutes of the time. Okay. So how you are going to deal with the missing data in the big data set? Okay, हम big data set की बात कर रहे हैं. तो try to always imagine कि बहुत बड़ा सा data set है, 1000 लोगों का है, 10,000 लोगों का है, and then you are finding some problem with the missing data. So how you are going to deal with that? So handling missing data in the Excel can make you more accurate analysis. Okay, अगर आपके पास missing data अगर आपने अच्छे से handle किया, तो आपका जो डेटा सेट को आप जो एनालाइज कर रहे हो उसको और आप इफिशिएंटली करोगे ना, क्योंकि आपको पता है कि 10 फील्ड्स है ही नहीं, 10 फोन नंबर नहीं है, 10 मेल आईडी नहीं है, 10 एम्प्लॉय के लास्ट नेम नहीं है, 10 एम्प्लॉय के फर्स्ट नेम में प्रॉब्लम है, वट एवर मे बी. आई एम जस्ट टेकिंग एग्जाम्पल विद द एम्प्लॉय डेटा, बट इट कैन बी एनीथिंग. ओके, सो हैंडलिंग missing data in the Excel while doing your data analysis. I'll just make your analysis more accurate. Okay, some techniques to manage missing data includes, so the very first is using count blank function. The very first is using, आप यूज करके देखो, हाँ, किसी आपके डेटा सेट पे count blank function to count the number of empty cells in the range. Okay, then what we are having, filtering out the missing values before performing calculations. Then next is replacing missing values with the specific number or maybe the calculated one value based on अदर डेटा जो भी रहेगा. आप एक सिंपल एग्जांपल में बताती हूँ, जैसे आप एक सिंपल, अगर हमने मार्क्स किसी मार्क्स को लेकर है, तो एक आप एवरेजली मार्क्स दूसरे इसका आप उसको दे सकते हो. ओके, सो एक एवरेज कंसिडर करने के लिए फॉर द एनालिसिस, ओके, फॉर द एनालिसिस, फॉर द सेक ऑफ एनालिसिस, कि वो एनालिसिस एफिशिएंट हो, इसलिए हम वो जो एम्प्टी वैल्यू है, जो ब्लैंक है, वहां पे हम कुछ वैल्यू डाल दें. मेनली ये जहां पे न्यूमेरिक वैल्यू है कैलकुलेशंस, वहां पे यूज होता है. दिस वन, द थर्ड वन विच आई हैड
added just now. Okay. And then we are having, oh, sorry. And then we are having the next one is utilizing functions like आप एवरेज यूज करके जो भी एवरेज आ रहा है वो वैल्यू को उसको रिप्लेस करना है, मतलब निकालना एवरेज है। ओके। और फिर एवरेज निकाल के यहाँ पे आप रिप्लेस कर दो वैल्यू, यू कैन रिप्लेस इट। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर? Clear? Is this clear? Ma'am, can you please repeat one more time? सबसे पहले आपको अगर एक बड़ा डेटा सेट है और उसमें से आपको काउंट मतलब चेक करना है कि कितना सेल का वैल्यू एम्प्टी है, यू स्ट्रेट अवे अप्लाई काउंट ब्लैंक फंक्शन। Okay. Okay. The second approach for finding out dealing with the missing data or finding out कितने missing cell है, you can filter out the missing values before performing the calculation. Filtration लगा दो, simple filters apply कर दो, so आपको पता चल जाएगा कितने blank values है। ठीक है। और आप Okay. उस ब्लैंक पूरे वैल्यूज को ही हटा दो, आपका डेटा सेट में से ही हटा दो। मतलब अगर मान लो आपका डेटा सेट है 1000 का और उसमें से 50 ब्लैंक है, मान लो 50 लोगों के आपके पास कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है, 50 लोगों के डेट ऑफ बर्थ नहीं है, विच एवर थिंग इज मिसिंग, यू जस्ट रिमूव दैट 50 पीपल आउट ऑफ योर डेटा सेट। इज इट क्लियर नाउ? Yes, ma'am. ओके। थर्ड अप्रोच है रिप्लेसिंग द मिसिंग वैल्यू विद द स्पेसिफिक नंबर। जैसे मान लो कि आपके पास अगर जैसे सिटी ब्लैंक है, लेट्स से, ओके, तो सिटी ब्लैंक है तो आप उसको एक एक जेनरिक सिटी हेडक्वार्टर जो भी आपके होगा, मतलब जैसे एम्प्लॉय मास्टर की बात कर रहे हैं, यू कैन जस्ट पुट इट दैट नेम टू ऑल द ब्लैंक बेसिकली सिटी। जैसे मान लो आपके 50 लोगों के सिटीज नहीं है, मिसिंग है, पर आपको 50 लोगों को भी रखना है डेटा एनालिसिस में, तो आप उनका जो सिटी ब्लैंक है या होम टाउन ब्लैंक है या परमानेंट एड्रेस ब्लैंक है, विच एवर इज अ ब्लैंक, यू कैन जस्ट अप्लाई वन नेम और देयर। आप आपके ऑफिस का एड्रेस डाल दो या आप एक जेनरिक सिटी वहां पे डाल दो, यू कैन रिप्लेस इट। Okay. Yes, yes. And next is the replacing missing value with a specific number or calculate one। ये जो लास्ट वाले दो है ना, ये हमेशा न्यूमेरिक वैल्यू पे यूज होता है। अगर किसी डेटा सेट का न्यूमेरिक पार्ट मिसिंग है, मतलब एक वेदर फोरकास्ट है तो वेदर फोरकास्ट में न्यूमेरिक वैल्यूज आता है, वो मिसिंग है। या किसी का सैलरी का डेटा सेट है, समवेयर द सैलरी पार्ट इज मिसिंग, एचआरए नहीं है, डीए नहीं है, या उनके वेजेस नहीं है, जो भी है, पीएफ नहीं है, ये जो न्यूमेरिक वैल्यू है ना, ये सब, ये सारे फील्ड्स जो रहते हैं उसकी न्यूमेरिक वैल्यू रहती है, समवेयर इट इज मिसिंग। तो आप क्या करोगे कि आप एक एवरेज कैलकुलेट करोगे उस डेटा सेट का, एंड देन यू विल फाइंड आउट कि अच्छा पीएफ जो है वो 1800 रुपये ही कटा है सबका, तो आप जो ब्लैंक है पीएफ किसी 50 लोगों का, आप वहां पे 1800 रिप्लेस कर दो, Okay, ma'am. Okay. लाइक दैट। ये इसलिए मैं आपको इतना इन डिटेल बता रही हूँ क्योंकि दिस इज अ वन ऑफ द प्रोबेबल क्वेश्चन फॉर अ डेटा एनालिस्ट रोल। इंटर्न्स और डेटा एनालिस्ट रोल के लिए ये सबसे प्रोबेबल क्वेश्चन रहता है कि हाउ यू डील विद द मिसिंग डेटा while doing with the data analysis। तो ये चारों अप्रोच आपको पता होनी चाहिए। These are the 4 approaches you normally apply when you face with the missing data। Is this clear to everyone? Yes, ma'am. Okay, fine। So यहाँ पे मैंने आपको अप्रोच भी बताया और क्वेश्चन का आंसर क्या देना है वो भी एक्सप्लेन करा है। Okay, fine। So on this note, I'm ending the session. Okay, and meanwhile, what I'm doing is there are so many ample functions. Okay, मतलब कुछ जो हमने डिस्कस किए प्रैक्टिकली डिस्कस करे और कुछ जो कॉमनली यूज होते हैं, लेकिन देर आर एम्पल ऑफ फंक्शंस इन द एक्सेल। ओके, जो हम एक स्टिपुलेटेड टाइम में इतना नहीं कर सकते, बट आई विल ट्राई टू डू इट maybe in the next class, but what I am doing is I have a ample of sheets which are already compiled with the functions। तो मैं आपको वो वन बाय वन आपको शेयर कर दूंगी। मे बी इन द नेक्स्ट क्लास आई विल बी शेयरिंग, और मे बी on the dashboard if any provision is given, so I will be sharing on that dashboard। Okay, so you might be able to access those sheets। Fine।
So I'm just stop sharing my screen एंड प्लीज आप प्रैक्टिस करो ये सारी चीजों का. आपको मैंने एक छोटा होमवर्क भी दिया है ड्यूरिंग द सेशन. प्लीज ट्राई टू फिगर आउट दैट बेसिकली डेटा, कंपाइल इट दैट डेटा एंड अप्लाई मैक्सिमम फंक्शन ऑन इट. ओके, आप आपके लॉजिक से भी एक डेटा सेट क्रिएट करके आप उसके ऊपर सारे फंक्शंस अप्लाई करके देखो. मोर यू प्रैक्टिस, मोर यू गेन कॉन्फिडेंस. ओके, सो एक्सेल इज लाइक दैट ओनली. Ma'am, can you please send the Word file? Today's word file. Yes, ma'am. 1 second, I'm just first closing it. Otherwise, I'm not able to share. 1 second. I hope you received. Yeah, everyone received? Yes, ma'am. Okay, fine. So today we will stop here and we will continue with the next session. Maybe we will be discussing more advancing into the Excel. Meanwhile, try to do all the practice part. Okay. Bye, everyone. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am.